Hello students, again I'm here for you. So we have in the first part we did about motion and we have completed uniform motion, average speed. We are talking about speed. We have to talk today's session we have to talk about speed with the direction. So when we are saying speed, we have already completed those. Let me first थोड़ा सा review कर लेते हैं. So मैंने आपको बताया था the person if moving from one place to another, that is called as an emotion, and the distance, actual the path which is covered by a person or a body, that is called as a distance, and the shortest distance between the initial and the final position of the body or the object, that is called as a displacement. Now the motion is of two types, that is uniform and non-uniform. Uniform means it is of covering an equal distance an equal interval of time, that is what called as a uniform motion. And non-uniform motion is they will cover an unequal distance in equal interval of time, means in every 1 hour. For example, if I'm taking an hour, so every 1 hour they will take a, say in the first hour they will cover about a distance of 2 kilometers, then in the second hour they will cover a distance of 3 or 4 or so on. So that is what called as a non-uniform motion. Now coming to the speed, as we are talking about, the speed is the distance traveled by a unit time, by a body in a unit time, that is what called as a speed. So it is formulated as distance over time. And if the body travels in a distance of say s kilometers or meters in a time t, or um, meters means versus with seconds, and kilometers versus with hours, so that will be kilometer per hour or meter per second. Anyways, so that is another one is average speed. So average speed is what is actually an average speed? Means average is a word when we say कि total होता है, total obviously. तो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब जब हम टोटल की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड कब बोलेंगे? जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है और टोटल टाइम लेते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. सो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ओके. Now coming to the speed with the direction. When the speed is a vector, I have already mentioned you in the first part कि quantities हमने दो parts में divide कर दिया है, vector quantity and scalar. Scalar don't have any direction, whereas vector has the direction. So scalar क्या होता है? Scalar is a quantity which is have only the magnitude, whereas vector has is a quantity which is having magnitude as well as the direction. So हम जब speed की बात करते हैं तो speed only we are talking about a speed which is without direction, it has only the magnitude, so that is a scalar quantity. So जब speed हम direction के terms में डालते हैं, that term is changed to be, that speed term is changed to be a velocity. So velocity को हम formulate करते हैं और we used to say velocity is the rate of a motion of a body, obviously because the speed is also the rate of a distance covered. So velocity is a the displacement of the body in a unit time. So displacement क्या है? हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली वेल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और टाइम के साथ, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. तो वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट of the body in a unit time. Now its unit is same as velocity itself, speed itself, that is meter per second or kilometer per hour. Coming to the average velocity, it is similar as average speed. Here we are going to take total displacement, whereas previously we have taken, in the case of average speed, we have taken total distance. Here we are taking total displacement by total time taken, or it can be also written as whatever the initial velocity plus final divided by 2, or it is u plus v by 2. So
The average velocity, what is u? It is the initial velocity, and v is the final velocity divided by 2. That is going to be give you the average velocity. Exactly. Now coming to the next, that is rate of velocity. Rate is during the uniform motion of the body in the straight line, the velocity remains constant with the time. And in that case, change in the velocity is at any in time interval is zero. So no change in the velocity. And during that, we will say that acceleration is change in the velocity with the time, right? So change कैसे हो रहा है? जो फाइनल होगा माइनस इनिशियल होगा, जो भी फाइनल था उससे माइनस करा इनिशियल, तो हमारे पास चेंज आ गया डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ इट बिकम एक्सेलरेशन. क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या था, हमने ऑलरेडी देखा था. वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय टाइम. सो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सो इट would be like this, and that will be written like this. So it is the unit is come with the help of, you can able to find the unit of any term or anything by using their formula. So formula is here, acceleration is equal to change in the velocity with the time and meter per second square. Okay, now obviously just like an motion, we have the uniform acceleration and uniform नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज वेल. सो यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें चेंज नहीं होता, इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म. और जिसमें चेंज होता रहता है या बढ़ता या घटता रहता है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल नहीं होता. सो यूनिफॉर्म मोशन as uniform acceleration is the change, if the change in the velocity is equal to the change, equal in the interval of time, every time the change is same. मतलब पहला इनिशियल था, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हर समय 2 का डिफरेंस आएगा. यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, एनी कैन बी. दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म. Now coming to the next, that is graphical representation. Graphical representation हम मोशन का क्यों करते हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा. जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ग्राफ मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस. पहली बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम इससे स्टडी करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट में और क्यों और कैसे वो मूव हो रहा है और कितना. By seeing the graph, we can easily observe whether it is increasing in a uniform or non-uniform, number one. Number two is whether it is increasing in it or decreasing, means it is accelerated or deaccelerated. So पहला ग्राफ है, that is a distance time graph. In the distance time graph, we can able to find the uniform speed in a straight line. You are able to see this is a straight line graph, and it is a distance time graph where distance is on the y-axis and time is on the x-axis. So हमारा distance time graph में क्या होगा, जितना, for example, if this is a, यहाँ पर एक बॉडी है, ए पोजीशन पे थी, यहाँ पर बॉडी बी पोजीशन पे आई, तो ये जो ग्राफ बना, जो डिस्टेंस कवर किया या टाइम कवर किया, एरिया अंडर द ग्राफ हम लेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस हमारा क्या आया और टाइम क्या आया, जिससे हमने क्या निकाल दिया, स्पीड. I think I make you clear. ये है नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ. इसमें आप देख रहे हैं, इसमें हम कहीं से भी 2 पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, बट हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस ही नाम निकाल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म में. इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम में क्या उसका स्पीड या वेलोसिटी रहा है, हम वो देख सकते हैं. दैट इज वी कैन एबल टू हेल्प इट आउट बाय नॉन यूनिफॉर्म ओनली. नॉन यूनिफॉर्म
ऑब्वियसली यूनिफॉर्म से भी निकाल सकते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म से हम उसका यूनिफॉर्मिटी नहीं होता, इसलिए वी कांट कैलकुलेट। यस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एमसीक्यू का लिंक मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जिस विच इज हैविंग 100 क्वेश्चंस अप्रॉक्स। यस, 100 क्वेश्चन ही है, 100 क्वेश्चन है, एंड यू कैन एबल टू take the MCQ and go for a test kind of. It's a MCQ and it is a real time classroom test which is having the timer as well. So log in, और जिसको उस टेस्ट में those who will get 90%, offer them about some scholarship discount they will able to get. And please be regular, we are continuously floating this kind of an MCQ and scholarship test जिससे आपको benefit मिलेगा. Now coming back to the graph. So velocity time graph, velocity time graph क्या होता है? Velocity time graph is velocity is on the y axis whereas time is on the x axis. हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्राफ की हम जब भी बात करते हैं तो जो एक्स एक्सिस वाला ग्राफ रहेगा वो हमेशा टाइम का रहेगा। एक्स एक्सिस में हमेशा हम टाइम रखते हैं, व्हाट एवर द नेक्स्ट वाला जो भी चीज आती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम हमेशा जो वाई एक्सिस होता है उसमें हम नेक्स्ट जो भी हम लेंगे वेलोसिटी या डिस्टेंस वो हम रखते हैं, हमेशा टाइम हम एक्स एक्सिस में आता है। Now, now coming to the topic, that is velocity time graph. Velocity time graph में हम क्या निकाल सकते हैं? Velocity is equal to, velocity क्या होती है? Displacement upon time. So displacement हम कैसे निकाल सकते हैं? Velocity into time. Velocity into time हम जब करेंगे तो velocity आपका ये आ रहा है यहाँ पर, that is इनिशियल आपका वेलोसिटी a था और फाइनल वेलोसिटी b था। अब b माइनस इनिशियल करें और t माइनस t1 करें तो आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज एन एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज अ रेक्टेंगल, दैट इज ABCD। जब आप लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब AB इनटू BD, then it is called as area under the graph. And apart from that, yes, so next graph is here you are able to see this is a velocity, this is a velocity, it is called as a non-uniform graph, but it is increasing the velocity, right? It is not decreasing it, so it is increasing the velocity. So area under the graph time velocity time graph, that is called as the displacement. So over in this time we have two figures, that is one is rectangle and another is a right angle triangle. So area under these two figures, that is area under the rectangle plus area of a triangle, that will give you the displacement of the body. Now coming to the, if the body whose velocity is decreasing with the time and the graph is straight line, then it is having decreasing slope like this. If it is, previously we have seen that is increasing, but if it is like this, then it is having a decreasing. And another one is this zigzag kind of a graph, which is a velocity time graph, which is non-uniform. It don't have any figure, we are not able to find out the figure or areas, right? Now we have the three equation of motion, but equation of motion हम एक next part में करेंगे क्योंकि वो एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो हमने अभी तक हमने किया है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पूरा हमने इक्वेशन किया, सॉरी दिस फॉर्मूलास किया है। और आई रिपीट, देयर इज एन MCQ लिंक is there at the bottom,
and please subscribe our channel and be regular in the session so that you will able to get all your complete ninth class grade syllabus of science and maths. हम maths का भी बहुत जल्द शुरू करने हैं because of some kind of an thing we won't be able to, but very soon we are. And yes, एक excitement gift भी है आप लोगों के लिए कि हम पूरा ये मोशन चैप्टर हम कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक स्पेशली एंड एक वीडियो भी दिखाएंगे किसके ऊपर, मोशन के ऊपर, सो दैट यू हैव अ वेरी क्विक एंड a good idea about the motion as well. तो उसके लिए stay tuned with us, like our channel, subscribe it, and please attempt the test which is given at the link is given at the description box. Thank you so much. See you soon in the next session.